Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today we are discussing MCQs on Shakespearean tragedy, Shakespearean theatre, The Winter's Tale, and King Lear. So we'll be studying three things in one file. So let's begin with MCQs. So first of all, Shakespearean hero is initially a noble person. So be it Hamlet, be it Macbeth, be it Othello, everyone initially is a noble person. Shakespearean hero suffers from a tragic flaw, which is also known as hamartia. As far as hero himself is concerned, he is not like the Greek hero, जो कि किसी इलाके का emperor हो, king हो. यहाँ पे with the passage of time tragedy के अंदर change आ चुका था और अब generals और princes इस तरह के लोग इनकी tragedy को भी tragedy समझा जाता था. So mostly Shakespeare wrote in iambic pentameter. तो ज़्यादातर इसने iambic pentameters use किए. Soliloquies are chiefly found in Shakespearean tragedy. So सबसे ज़्यादा use इसका तकरीबन हम देखते हैं Shakespearean tragedies में. Greeks में ये चीज़ बहुत rare थी, उसके बाद भी काफ़ी अर्सा ये चीज़ disappear रही. We find them in Elizabethan theatre and more especially in Shakespeare. So Shakespearean tragedy also included supernatural elements, जो कि हमें Hamlet, Macbeth इनमें काफ़ी prominent नजर आते हैं, Tempest के अंदर भी हैं. Shakespearean tragedies were performed especially for those who could not read or write. ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए perform होते थे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, जो उस play को पढ़ नहीं पाते थे. So for them, they would perform it. The theaters were the wooden structures. जो theater की building थी, वो wood की constructed थी. जो female characters से वो boys perform करते थे. Like younger boys having like उस age में आवाज तकरीबन copy हो जाती है, imitate हो जाती है. So boys को use किया जाता था. So Shakespeare introduced many characters in a single play. इससे पहले characters जो थे वो काफी limited होते थे. So Shakespeare, he came with inclusion of so many characters in one play. There was no stage crew in Shakespearean theatre. So actors को खुद काम करना पड़ता था, crew का भी. So the crew होता था basically, with the stage crew, whatever. Those people were basically the actors themselves. कोई extra crew नहीं होता था. Plays were organized by acting companies. So acting companies plays को organize कराती थी, manage करती थी. जो Shakespeare का theatre जो perform होता था, that was also there under some company. Each week 6 plays जो थे वो perform होते थे हर कंपनी की थिएटर में. Actors worked for managers and after some time they became a permanent member of the company. तो जब वो काफी इन हो जाते थे, experienced हो जाते थे, तो वो उस कंपनी का permanent member यानी permanent actor बन जाते थे. Now, what is specific about Shakespearean tragedy? It is like every main character dies in the end. और near the end. हर बंदा इसमें मर जाता है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में. So Winter's Tales is a tragi-comedy. Winter's Tale tragi-comedy है. शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडीज भी लिखी, tragi-comedies भी लिखी. King Leontes was king of Sicilia. So Leontes in Winter's Tale Sicilia का king है. His wife was Hermione. King Polixenes was king of Bohemia. King Polixenes was a friend of King Leontes. बचपन का दोस्त होता है इसका. Hermione stops and prolongs the stay of King Polixenes.
जब वो जाने लगता है काफी अरसा रह के, तो लेओंटीज उसे रोकता है, वो नहीं रुकता, लेकिन हरमाइनी के कहने पे वो रुक जाता है. सो दिस थिंग इज in a way developing a jealousy in Leontes कि मेरे कहने पे नहीं रुका, लेकिन when my wife said so he stayed, it means कि there is something. Leontes orders his loyal retainer dashed poison the Bohemian king, so he orders Camillo को ऑर्डर देता है कि तुम किंग को पॉइजन दे दो और ताकि ये मर जाए, क्योंकि he is now stuffed with jealousy within his head. Camillo warns Polixenes of poison. So Camillo on the other hand वो क्या करता है, बजाय इसके कि वो उसे बताने के पॉइजन करने के, वो उसको उल्टा बता देता है. And both of them flee towards Bohemia. Camillo और Polixenes दोनों बोहेमिया चले जाते हैं. Leontes now publicly accuses his wife of infidelity. उस पे openly इल्जाम लगा देता है. He declares that the child she is bearing must be illegitimate, कि वो बच्चा भी जो है वो इससे belong नहीं करता, Leontes से. The queen gives birth to a baby girl in a prison, जहाँ पे वो बंद होती है, so she gives birth to a girl, एक बेटी पैदा होती है. Paulina is a loyal friend of queen. Hermione की best friend होती है, loyal होती है, trusted होती है. She brings the baby to the king, but he does not melt. बल्कि उसको गुस्सा आ जाता है उल्टा, और वो उसको बेबी को वहां से exile करा देता है. The king orders Paulina's husband to take the child and abandon it some desolate place. So that is Lord Antigonus. Antigonus जो है Paulina का husband होता है. Like he in a way takes a child ताकि वो उसे abandon कर दे. Oracle comes that Hermione and Polixenes are innocent. So इससे पहले वो Oracle की तरफ मैसेज भेज चुका होता है शुरू में Leontes to check whether they are having an affair or not. So उधर से ये correction और amendment या decision आ जाता है कि like they are innocent, उनके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं था. अब ये इस चीज पे किंग बहुत ज्यादा रिपेंट करता है. Leontes' son has died of wasting sickness brought on him by the accusation against his mother. So the name of the son is Memellus. जो Memellus है, basically it is about him. वो मर जाता बेचारा. King is reported that Hermione is dead. बादशाह को इत्तला ये मिलती है कि उसकी बीवी मर चुकी है. Leontes' daughter is named as Perdita, जो कि इसने भेज दी थी, बचपन में निकाल दिया था. Antigonus is meanwhile killed by a bear. वो जो लॉर्ड होता है Paulina का husband, he is killed by a bear. Perdita is raised by a kindly shepherd, जिसके पास वो बड़ी होती है, और इस बात को बहुत सारे years गुजर जाते हैं, 16 years, and the son of Polixenes falls in love with Perdita. So son का name Prince Florizel है. So this is the son of Polixenes, जो कि 16 साल बाद he is almost young and he is in love with Perdita. Now his father and Camillo discover this love affair when they come in a disguise. So when they come there to look after things, they find the young couple. Polixenes orders his son not to meet the girl again, क्योंकि उसके लिए वो एक शेफर्ड की ही बेटी है. Florizel and Perdita run and take a ship for Sicilia. तो वो सिसिलिया की तरफ चले जाते हैं, not knowing कि Sicilia belongs to Perdita and she is the future queen. Florizel in Sicilia, he pretends to be on a diplomatic mission from his father. So Leontes उसको लेके बड़ा खुश होता है, क्योंकि it's been long उसकी Polixenes से मुलाकात नहीं होती, वो guilty भी होता है.
Florizel doesn't tell him reality. Leontes is told by Shepherd that Perdita and his daughter, ये वो उसकी बेटी है, वो उससे बिलोंग करती है. So by the end, everyone is amazed to see that Hermione is restored to life. ये miracle होता है, Hermione जो है वो वापस जिंदगी में आ जाती है. So this was only to show the king she was not dead actually. As the play ends, Paulina and Camillo are engaged. So उनकी engagement हो जाती है. Now, the second one, King Lear. So Lear is the king of what country? So he is the king of Britain. Lear has 3 daughters. So Goneril, Regan and Cordelia. ये 3 बेटियां होती हैं King Lear की. So this story is about, like, it tells the tale of a king who bequeaths his power and land to 2 of his 3 daughters. कि तीनों बेटियों में से वो 2 बेटियों को अपना लैंड और अपनी पावर दे देता है. इट मीन्स कि बेटियों और सन इन लॉस को क्यों पावर दी जाती है? कि आफ्टर दे डिक्लेयर देयर लव फॉर हिम इन फॉनिंग एंड ऑब्सिक्यूस मैनर, कि वो बड़ा एक अजीब से मैनर में अपने बाप को फ्लैटरी करके अपने लाइक मोहब्बत का, झूठी मोहब्बत का एहसास दिला देती हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि किंग उनको कहता है कि लाइक व्हाट यू कैन ब्रिंग फॉर मी, व्हाट और हाउ मच यू लव मी, प्रूव इट. तो वो दोनों बेटियां बड़ी लैंग्वेज यूज करके खूबसूरत अंदाज में बताती हैं इस बात को. लेकिन यहाँ पे जो लास्ट बेटी है Cordelia, so she truly loves her father and she says love for you cannot be expressed in words. तो बादशाह इस चीज को बड़ा नेगेटिव लेता है कि she did not even try, तो वो उसको exile में भेज देता है. So Cordelia is sent to exile. So she is exiled because she gets nothing for her father, because she will not flatter him like her sisters had done. She goes to exile with King of France. So King of France आता है जिसके साथ वो exile में चली जाती है, यानी फ्रांस चली जाती है. Albany is the name of husband of Goneril. So Goneril जो बेटी है उसकी, लेयर की, उसके husband का नाम Albany है. When Lear visits Goneril, what does she demand of him? So by the time अब Lear को ऐसा आइडिया होता है कि Cordelia was a good daughter, लेकिन रेगन और गोनरेल ये अच्छी बेटियां साबित नहीं हुई, रादर इन्होंने मुझसे पावर्स मेरी ले ली. दे आर ऑलमोस्ट रूलिंग द कंट्री और मेरी वो वैल्यू नहीं रही, मेरी इज्जत नहीं रही. सो अपने बाप को वो कहती है कि अपने नाइट्स को यहां से भगा दो. और वो क्यों कहती है? क्योंकि शी सेज कि इसके लेयर के जो सर्वेंट्स हैं, नाइट्स हैं, ये बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं. सो दिस इज a disrespect for a king and especially for a father. So Lear को ये बात बड़ी बुरी लगती है. Both the elder daughters eventually betray their father. Unable to believe that his beloved daughters are betraying him, Lear slowly goes insane. आहिस्ता आहिस्ता इसकी अकल सोच समझ खत्म होती जाती है. Then there is another person, Gloucester. So Gloucester has a bastard son whose name is Edmund. Gloucester himself is a noble man loyal to King Lear. उसका loyal होता है, करीब होता है. Regan जो इसकी बेटी है Lear की, she is married to Duke of Cornwall. इससे इसकी शादी हुई होती है. When they hear that Lear is coming to visit them, where do Regan and Cornwall go? So they go to the Gloucester's castle. Why is Kent thrown into the stocks? उसे क्यों फेंक दिया जाता है stocks के अंदर? For beating Oswald with the flat of his sword. उसे Oswald एक कैरेक्टर को मारता है. क्यों मारता है वो उसको? Kent's attack on Oswald is a reaction to the steward's dishonesty. कि वो he was a dishonest person. और Goneril के orders को पूरा नहीं किया. Goneril was since ruling. When he flees from his father,
How does Edgar disguise himself? तो मीन वाइल जब ये वहां पे कॉर्नवेल होता है, उसकी लाइक ग्रोनिल वहां पे है, लेयर वहां पे जाता है, तो मीन वाइल एडगर जो कि ग्लोचेस्टर का ट्रू सन होता है, लाइक हिज ओन सन, सो एड जो दूसरा सन है, इलिजिटिमेट सन एडमंड, वो उस पे ग्लोचेस्टर पे हमला करा के एडगर पे इल्जाम लगा देता है, एंड एडगर जो है वो वहां से भागने पे मजबूर हो जाता है, उसे ट्रेटर समझा जाता है. सो ही इज नाउ डिस्गाइज्ड लाइक अ कॉमन बेगर. When Lear tells Regan that Goneril has wronged him, what does Regan advise him to do? So she advised him to go to Goneril and ask her forgiveness, which is again beneath the status of a king and a father. After he curses both the girls, what does Lear do? So he storms out of Gloucester's castle with Fool. So Fool is very important character. He is he's the king's advocate, loyal and honest person. अब इसका नाम फूल है आयरोनिकली, बट इज नॉट फूलिश पर्सन. इसको फूल के नाम से ही एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन ये वो बंदा है जो कि किंग लियर को सही और गलत का फर्क बताता है. एंड ओनली ही इज एबल टू पॉइंट आउट द किंग्स फॉल्ट्स एज नो वन एल्स कैन. तो सिर्फ यही है जो कि उसको उसकी फॉल्ट्स, उसकी गलतियां बता सकता है, जो कि कोई दूसरे नहीं बताते. The fool's use of irony, sarcasm, and humor help to ease the truth and allows him to moderate Lear's behavior. तो बहुत ज़्यादा throughout the play he uses sarcasm, irony, humor, और वो उस truth को बड़ा उसके भयानक असर को कम करता है, Lear के behavior को improve करता है. Why is Gloucester accused of treason? So Gloucester क्यों accused होता है treason का? Because Edmund reveals letters showing that he knows of a French invasion. So Edmund अपने almost father के ऊपर इल्जाम लगवा देता है. Where does Gloucester send Lear and his attendants to Dover, जो बंदरगाह है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में? How is Gloucester punished for his treason? He is blinded. उसको blind कर दिया जाता है. Who encounters Gloucester on the heath and offers to lead him to Dover? So it is his real son Edgar, जो कि अपने बाप को मिलता है. Who is leading the army that lands at Dover? So it is Cordelia. She is leading the army. Why does Gloucester want to reach the cliffs of Dover? Because he wants to throw himself down. वो अपने आप को नीचे गिराना चाहता है. To whom are both Goneril and Regan attracted? दोनों बेटियों की attraction होती है एडमंड की तरफ, जो कि illegitimate son होता है ग्लोचेस्टर का. Before the battle between the French and English armies, to whose camp is Lear brought? So he is brought to Cordelia, his own daughter's camp. What happens to Lear and Cordelia during the battle? So Edmund takes them captive, उन्हें कैद कर लेता है. How does Regan die? So Goneril poisons her, कि वो उसके husband Albany को बता ना दे कि she was flat for Edmund. Who fights a duel with Edmund? So it is Edgar, जो कि उससे duel करता है. What does Edmund reveal as he lies dying? So उस duel में मर जाता है वो, तो उसमें मरने से पहले बताता है कि उसने ऑर्डर कर दिया था कि कोर्डेलिया को मार दिया जाए. What happens to Cordelia? She is hanged in prison. वो प्रिजन में उसे फांसी दे दी जाती है. What happens to Lear at the end of the play? That he dies while weeping over Cordelia's body. उसको realize होता है कि कौन ठीक था मेरे लिए और कौन गलत. And who survives by the end? So it is Albany, Edgar, and the elderly Kent, जो कि इस sorrowful environment में they are there to take care of the country. So this was from
Shakespearean tragedies, Winter Tale, and like Shakespearean theater, Winter Tale, Winter's Tale, and King Lear.